Good morning students. Today we start the next lesson, 11th lesson, push and pull. Okay? Push and pull. So you know the meaning of the push and pull? Okay? You know that? See, on page number 105 there is some pictures are given here. Okay? See this, that boy is what he is do? He push that trolley. Okay? These girls is pull this bag. So number of the activities are doing by that childrens. So in that pictures you can say that if you observe that pictures, so what you observe it here, that boys and girls apply the force on that object, means it pull or push it. Means what we can say that push and pull is nothing but the what? Force. वो क्या है? Force. Okay? It is the force. And when this force we apply on the object, then what happen? These objects can move from one place to another. Okay? And their direction will be also change. So let us discuss about the force. Force means what? It is nothing but the push or pull. Okay? When we open a door from outside, okay, so or from inside, we open the door from inside. What happened? We pull it. Means उसको हम खींचते हैं. Okay? So it is one type of force we applied on it. And what happened if you want to close the door? Then that door we push it. Okay? Means push or pull applied on object is called force. वो क्या है? Force. So there are the many actions in our daily lives, that playing the cricket or kicking the footballs, number of the or sharpening the pencils. Okay, so number of the works are doing by applying the force on it. So हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पे तो उससे कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं. ओके, उसके कुछ इफेक्ट्स हमें मिलते हैं फोर्स पे, ऑब्जेक्ट्स पे. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स? सी इफेक्ट ऑफ द फोर्स. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है? हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके, सो व्हाट अ फोर्स कैन मूव ऑब्जेक्ट्स. एक तो ऑब्जेक्ट एक जगह पे से दूसरी जगह जाएंगे, मीन्स देयर पोजिशंस आर चेंज. सेकेंड में अ फोर्स कैन ऑल्सो मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. मीन्स वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव है और हम फिर से हम उससे फोर्स अप्लाई करें तो उसका रेट क्या होगा? फास्ट होगा, वो और ज़्यादा फास्ट होगा. अगर हमारे तरफ कोई बॉल आ रही है, हम उसको फिर से किक करेंगे तो क्या होगा? वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी. ओके, मीन्स अ फोर्स कैन ऑल्सो मेक द मूविंग ऑब्जेक्ट मोर फास्टर. थर्ड इफेक्ट क्या होगा? अ फोर्स कैन स्टॉप द ऑब्जेक्ट. A force can stop the object. Suppose moving car, when we apply the brake, mean one type of force we apply it. Okay, when you brake the car, then what happened? The car is stopped, means the moving object is stopped. Okay, next effect, a force can change the direction of moving object. फोर्स एक तो मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस भी चेंज कर सकते हैं. ओके, जैसे कि अगर हमारे तरफ बॉल आ रहा है, ओके, और हमने फिर से उसको किक मारे तो क्या होगा? वो हमारे डायरेक्शन की तरफ आ रहा है. हम अगर किक मारे तो अदर डायरेक्शंस पे मूव होगा, मीन्स की डायरेक्शंस चेंज होगी. ओके, नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो सकता है. हम अब अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे पॉटर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे from clay it made the things, one type of things. So what happened? It changed the shape of that clay. Okay, means when we apply the force on it, the shape of the clay also change. So this is the effects of the force.
ओके मीन्स क्या क्या हो सकते हैं, फोर्स अगर हमने अप्लाई किए तो क्या हो सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। Okay, there are the four types of force. One is the muscular force, second magnetic force, third gravitational force, and fourth frictional force. Okay, frictional force. So today we discuss this two force. See, muscular force. Muscular force means force applied by our muscles. Okay, force applied by our muscle is called muscular force. Suppose we applied a force on the ball. Okay, when we kick the ball, then what happened? My body part is used for that. Means the force that applied by our body is the muscular force. इसमें हमारे muscles use कर रहे हैं हम. Okay, तो क्या हो गया? Muscular force. Okay, means when we push or pull something, we apply the muscular force on it. So it is the first type, muscular force. Okay, second, magnetic force. Magnetic force means magnet. You know magnets. Most of the children play with the magnets. Okay, so magnet have ability to attract toward itself some things. मैग्नेट से कुछ थिंग्स उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ओके, सो बिकॉज व्हाई दैट हैज अ एबिलिटी, दैट हैज अ फोर्स टू अट्रैक्ट टुवर्ड इटसेल्फ. एंड मैग्नेट हैव अ टू पोल्स. मैग्नेट हैव टू पोल्स, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. ओके, साउथ एंड नॉर्थ. So what happened in magnet? When we take the two magnets, it is a and B. Okay, when we take a two magnets and here suppose north pole and south pole. So what happened in A, south pole and it is the north pole. Means here A and B, the north and north means same pole. When come to close together, then what happen? It repels to each other. So क्या करेंगे? Repels होंगे एक दूसरे. Okay, and opposite means when we put the south pole here and north pole on the other end, means here the poles are different. One is north and another is the south. Means it is the different. Okay, and what happened? It attract to each other. अगर डिफरेंट अपोजिट पोल रहे तो क्या होता है? वो मैग्नेट्स अट्रैक्ट होते हैं. ओके, एंड सेम रहे तो रिपेल्स होते हैं. ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स. मीन्स फोर्स दैट विच magnet attract or repels iron objects. Okay, or another magnet is called magnetic force. So do you understood this topic? So next topic, gravitational and frictional force, we will discuss in the next period. Okay, thank you.